Good afternoon, everybody. Good afternoon. I hope you are in the best of health and everything. And today हमारी दूसरी सेशन चालू है अब बिटसैट लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 2. एज यू नो yesterday हमने कल कुछ टॉपिक्स किए थे ऑन वर्बल रीजनिंग और मैंने ये भी कहा था कि आई विल कंटिन्यू विथ द वर्बल रीजनिंग पार्ट एंड ऑल्सो आई विल इंट्रोड्यूस द नॉन वर्बल रीजनिंग, राइट. तो इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आपको याद होगा कल हमने रीजनिंग में कल किया था सीरीज, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट. ये हमने 5 चीज़ें कल की थी. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सी द वीडियो वंस अगेन, पॉज द वीडियो. और आपको ये भी याद होगा कि हमने कुछ सवाल छोड़े भी थे बीच में फॉर यू टू डू इट. सो आई रिक्वेस्ट यू to do those questions once again, right? And then look at this video too. Okay, so रीजनिंग की एक खास बात है कि किसी टॉपिक का किसी से कोई संबंध नहीं है, राइट. जैसे मैथ्स में है या फिजिक्स में रहता है तो कुछ टॉपिक का कुछ से संबंध होता है. रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. बट अगर प्रैक्टिस जितना करेंगे रीजनिंग में उतना एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी, राइट. So without wasting any time, let's start the BITSAT logical reasoning part 2. and हम लोग आज क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं. We are going to do analytical reasoning, जो मैंने आपसे कल कहा था, जो कल करने की बात थी वो हम लोग आज करेंगे. and also cubes and dice, right, very important thing. clocks and calendars and non-verbal reasoning, जिसमें we'll do questions of series, figure matrix, paper folding and figure counting. So these are the 4 main topics that we are going to do today. So follow what I am trying to say. Now analytical reasoning, sitting arrangement और blood relation जो हमने कल किया था, that's also part of analytical reasoning, right? But analytical reasoning में बहुत सारी तरह के questions आती हैं. Mainly जो questions आती हैं in analytical reasoning is ranking and scheduling, right? So scheduling and ranking, पहले ranking के कुछ questions हम लोग करते हैं. Now to understand the process of ranking, I will do the questions later on. Let me take a very simple example of ranking. Suppose if I tell you that there are 5 students in the class, right? Class में मान लो 5 बच्चे हैं, say A, B, C, D, E. and suppose करो B की रैंक जो है वो सेकंड है. तो जनरली हम कहते हैं रैंक जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं टॉप से. बॉटम से कभी किसी ने आपने सुना नहीं होगा. बट हम जब कहते हैं कि रैंक आपकी आई है नंबर 2, तो मतलब टॉप से नंबर 2 है. जितने भी बच्चे हैं टॉपर जो भी होगा उसके बाद आपकी रैंकिंग, तो मान लो 2 रैंक है. अब इसी बच्चे की बी स्टूडेंट की बॉटम से क्या रैंक है? कैन यू सी इट? थैंक यू सो मच श्रेयस फॉर दिस वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट. अक्षत ऑल्सो, यस, राइट. असली पेपर्स में इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं. Okay, so if you see over here, what is the rank from the bottom? What is the rank of B from the bottom? अगर B का टॉप से रैंक 2 है, what is the rank from the bottom? बहुत सारे बच्चे कहेंगे 3 है, it is actually 4. अमेजिंग लग रहा है. टॉप से रैंक 2 है, बॉटम से रैंक 4 है. बच्चे कितने हैं क्लास में? 5. That is a beauty. These are the kind of questions which are asked in ranks. So if I say that B की रैंक अगर टॉप से 4 है और टॉप से 2 है, सॉरी, एंड बॉटम से 4 है, तो कितने बच्चे हैं क्लास में? How many students are there in the class? You are seeing physically मैंने 5 डंडे यहाँ पे दिए हैं, तो मतलब 5 बच्चे, राइट. बट हाउ विल वी डू इन एग्जाम? अगर आपको 25 बच्चे हुए या 30 बच्चे हुए तो श्योरली आप डंडे में मार के तो नहीं करोगे. देन यू नीड टू हैव सम टेक्निक ऑफ डूइंग द क्वेश्चन. द टेक्निक इज वेरी वेरी सिंपल. इफ योर रैंक फ्रॉम द टॉप अगर 2 है, राइट, और बॉटम अगर 4 है और बच्चे हैं यहाँ पे 5, तो व्हाट यू हैव टू डू इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं टॉप से रैंकिंग प्लस बॉटम से रैंकिंग -1 कर देते हैं, क्योंकि बी को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं तो एक बार में माइनस करना पड़ेगा, राइट. So it will be 5 students in the class. Conversely, अगर मैं आपसे कहूं कि टॉप से आपका रैंक 2 है in a class of 5, then what is your rank from the bottom? It is 5 minus 2, उसमें हम 1 add कर देंगे, so then it becomes 4, right? So very simple formula आप कह लो या कुछ भी कर लो, but इसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, please don't remember it. Just इतना याद रखना,
टॉप से जो भी रैंकिंग होती है, बॉटम से रैंकिंग अगर निकालेंगे तो हम 1 ऐड कर देंगे, राइट। बच्चों में से टॉप की रैंकिंग माइनस करके हम 1 ऐड कर देंगे। और अगर टॉप की रैंकिंग और बॉटम की रैंकिंग दी हुई है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, इट विल बी 2 + 4 - 1, विच मीन्स टॉप की रैंकिंग प्लस बॉटम की रैंकिंग -1. That is the funda for ranking questions. Clear or not? Hope you understood this one, right? Yes. Okay, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. Let me do one question for you. Simple question है, Manu and Suresh are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 31 students. What will be their respective ranks from the bottom in the class? ये respectively लिखा हुआ है, respective ranks होगा. What will be their respective ranks from the bottom in the class? Right? What will be their rank? Please tell me. How will we do this? Very simple. 31 students. Manu की rank is 7th from the top, so from the bottom the rank will be 31 - 7 + 1, which will be 25th. So from the bottom it will rank will be 25th. Suresh की rank क्या होगी? 31 - 11 + 1 will be 21st. Right? So 25th and 21st, C will be the answer. Right? समझ में आई बात? Right? So this is a question of ranking. Now one more question of rank. Raj is 7 ranks ahead of Suresh in a class of 39. If the rank of Suresh is 17 from the bottom, what is the rank of Raj from the top? Please tell me. What is the answer? What is the answer, please? Raj is 7 ranks ahead of Suresh in a class of 39. If a rank of Suresh is 17 from the bottom, तो Suresh की 17 from the bottom है, तो टॉप से रैंकिंग कितनी होगी? 39 - 17 + 1 will be 23 from the top. And Raj 7 आगे है, तो Raj की रैंक 23 - 7 16 from the top होगी. Answer will be C option. Very easy. Okay, right? Now I'm moving on to a question जो कि पूछा गया है. Okay, in a row of boys, if A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their positions, as a matter of fact बॉटम और टॉप की जो अरेंजमेंट होती है, जो फंडा होता है, वही राइट एंड लेफ्ट का फंडा होता है, राइट. सो इन अ रो ऑफ बॉयज, इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट and B who is 9th from the right interchange their positions, A becomes 15th from the left. How many boys are there in the row? Right? तो A जो है वो 10th from the left है और B जो है 9th from the right है. अब अगर A इंटरचेंज कर देता है, यानी कि A becomes 9th from the right and A at the same time is 15th from the left, तो how many students are there? जो टॉप एंड बॉटम का फंडा है वही राइट एंड लेफ्ट का फंडा है. सो इट विल बी 15 + 9 - 1, so number of students will be 23. The options are very far apart. अगर कंफ्यूज करना होता तो इसमें से एक ऑप्शन अगर 24 दे दिया होता तो the question would have been much more difficult, right? So the answer for this question is very easy. इसका आंसर है 23, right? तो ये हो गए रैंकिंग की क्वेश्चंस. अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं शेड्यूलिंग की. कई सारे एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम शेड्यूलिंग दैट विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग इन टर्म्स ऑफ शेड्यूलिंग क्वेश्चंस. तो मैं एक सेट ले रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि वो सेट आप लोग पढ़ो अच्छी तरह से, राइट. पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम लो और उसके बाद मैं क्वेश्चन को करूँगा. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे एक केस दिया रहता है. मैंने भी कल एक क्वेश्चन आपको कराया था हस्बैंड वाइफ का और कलर्स का. यहीं पे ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि देयर आर 6 लेक्चर्स ऑन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. 6 लेक्चर 6 डिफरेंट सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, हैव टू बी शेड्यूल्ड अक्रॉस 7 डेज. 7 दिन तक ये क्लासेस चलेगी. लेकिन क्लासेस 6 होंगी, स्टार्टिंग संडे एंड एंडिंग सैटरडे. संडे से क्लास शुरू होगी, सैटरडे को क्लास एंड हो. द शेड्यूल हैज टू बी ड्रॉन आउट फॉर द सब्जेक्ट सच दैट. अब ये 4 केसेस है. 4 केसेस के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन से लेक्चर्स किस दिन होंगे.
ओके तो ये सच दैट वाले जो 4 पॉइंट्स है मैं चाहूंगा आप लोग अच्छी तरह से देखो एक बार, right? I'll pause the video for just 20 seconds, go through this 4 cases of such that, and then we'll do the questions. Question karna is not that much important. The thing is to crack the set, because if you crack the set, एक साथ एक झटके में तीनों के तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट? सो सेट को पहले अच्छी तरह से ध्यान से देखो एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस, ओके? राइट तो मैंने क्या किया है, मैंने इस सेट को अगली पेज में भी दिया हुआ है, तो अब मैं सिर्फ स्टैंड अलोन इस सेट को ही हम लोग देखते हैं एंड देन वी विल डू द सेट इन अ प्रॉपर वे. 6 lectures on 6 different subjects are scheduled, have to be scheduled across 7 days, starting Sunday and ending Saturday. Okay. Okay. तो Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ये हमारे 7 दिन है, राइट? ये लिखने में जो टाइम लग रहा है, एग्जाम में आप थोड़ा और फास्ट करेंगे, अभी हम लोग समझाने के लिए कर रहे हैं. One day has to be holiday, it can be neither Sunday nor Saturday. तो जो केसेस जो चीजें रिलेटेड नहीं है उसको आप लेफ्ट में लिखो. जैसे संडे को हॉलीडे नहीं है तो क्रॉस कर दो हॉलीडे, सैटरडे हॉलीडे नहीं है क्रॉस कर दो हॉलीडे, यहाँ पे हॉलीडे नहीं होगा. हॉलीडे इन 5 दिनों में से कोई एक दिन होगा. ज्योमेट्री हैज टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर एल्जेब्रा, यानी कि एल्जेब्रा के बाद होगा ज्योमेट्री, एल्जेब्रा के बाद होगा ज्योमेट्री. फिजिक्स कैनॉट स्टार्ट द सीरीज, ओके तो यहाँ पे फिजिक्स नहीं होगा, संडे को फिजिक्स नहीं होगा, so physics also cross. And has to be done exactly 2 days before astronomy. When I say 2 days before astronomy, common sense says, in fact 99% of the students will make this mistake. ये commonly mistake ये करेंगे कि physics gap astronomy ऐसा करेंगे, right? जो कि गलत है. Physics cannot start the series and has to be done exactly 2 days before astronomy. जब मैं कहता हूं 2 days before astronomy, that means there is a gap of 2 days or 1 day. अभी मैं कह रहा हूं कि आज मेरी लेक्चर है 18th मई, राइट? और मेरी अगली लेक्चर आज से 2 दिन बाद होगी, तो विल इट बी ऑन 20th मई और 21st मई? प्रैक्टिकली सोचो आप. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. 18th में आज का दिन है, अभी से 48 आवर्स बाद जो होगी मेरी क्लास होगी तो 20th में होगा ना, यानी कि एक दिन का गैप होगा. सो इट विल नॉट बी 2 days गैप, इट विल बी ओनली 1 day गैप. ओके सो फिजिक्स गैप एस्ट्रोनॉमी, राइट? दैट विल बी द थिंग. बायोलॉजी has to be taught on Thursday. This is the only direct of information. Biology has to be done on Thursday and cannot immediately follow physics. And cannot immediately follow physics. तो फिजिक्स जो होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे संडे को नहीं हो रहा है, राइट? वेडनेसडे को भी नहीं होगा. ओके तो हम कह सकते हैं कि कब होगा यहाँ पे, और ज्योमेट्री और अलजेब्रा एक साथ हो रहा है, तो एक साथ अगर यहाँ पे नहीं हो सकता और यहाँ पे नहीं हो सकता है तो पहले तो अलजेब्रा ज्योमेट्री तो फ्राइडे सैटरडे को होना ही होना. ओके राइट? अब हम फिजिक्स कैनॉट स्टार्ट द सीरीज, तो हम कहेंगे यार फिजिक्स जो होगा वो यहाँ पे होगा एंड हैज टू बी डन एग्जैक्टली 2 days बिफोर एस्ट्रोनॉमी, तो यहाँ पे एस्ट्रो हो गया. और यहाँ पे जो फर्स्ट डे वो कौन सा सब्जेक्ट होगा? इट विल बी केमिस्ट्री. डन, एक सेट एक झटके में हो गया. केमिस्ट्री से शुरू होगी, फिर फिजिक्स, फिर गैप मतलब वो होगा हॉलीडे. एस्ट्रो होगी वेडनेसडे को, बायो होगी थर्सडे को, एल्जेब्रा होगी फ्राइडे को और सैटरडे को ज्योमेट्री. एंड ऑफ द सेट. ओके अगर आपने 2 दिन का गैप लिया तो आपका सारा सेट गलत हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर, अगर कोई कहता है कि अब से 2 दिन बाद क्लास होगी, यानी कि गैप जो होगी वो 1 दिन की होगी. क्लियर? अब से 2 दिन बाद क्लास यानी कि गैप जो होगी वो 1 दिन की होगी. अब से 48 आवर्स बाद यानी कि अभी से परसों होगी, नरसों नहीं होगी, राइट? सो नाउ वी कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली. Which subject will start the series of lectures? It will be chemistry. Which of days is a holiday? Holiday कौन सा दिन था? Holiday था Tuesday को, so Tuesday हो गई holiday. On which day is the lecture in physics schedule? Physics को कौन सा दिन था? Physics Monday को था, so it will be Monday. That's it. So these are the kind of questions which are
commonly asked in ranking and scheduling kind of questions. Right? I hope you understood this set. समझ में आई होगी आपको सेट. बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है कि जो गैप होता है वो क्या लेना चाहिए. ओके, राइट. Yes, 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 yes. Very good. Okay. Can we move on to the next kind of topic now? The next topic is on analytical reasoning is cubes and dices. So we'll start with cubes and dice. Right? दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों का जड़ जिसे कहते हैं रूट वो एक ही है, बट दोनों में तरह क्वेश्चन टाइप्स जो होते थोड़े डिफरेंट होते हैं. अब क्यूब्स एंड डाइस में पहले हम करेंगे क्यूब्स के क्वेश्चन. What is this cube question all about? Let me give you a very simple example of a cube question. Okay, the question types जो normally पूछे जाते हैं. Okay, तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब दिया जाता है. Okay, so I'm drawing a cube in front of you. और कहा जाता है something like this, a cube of 3 by 3 say, a 3 by 3 by 3 cube is colored रेड ऑन ऑल साइड्स. ठीक है, एक क्यूब है जो 3 बाई 3 बाई 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, जिसको हमने हर तरफ से रेड कलर से कलर कर दिया. राइट, अब इस क्यूब को 27 क्यूब्स में काटा जाता है. राइट, बल्कि कभी कभी क्वेश्चन में 3 इंटू 3 इंटू 3 नहीं भी दिया रहेगा, सिर्फ इतना दिया रहेगा, एक क्यूब है जिसको रेड कलर से कलर किया गया और इसको 27 क्यूब्स में काटा है. राइट, हर तरफ से क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, आई होप यू नो दिस, इट इज 6 फेसेस. राइट, तो उसको हमने 27 क्यूब्स में काटा. ओके, नाउ और उन क्यूब्स को हमने अलग अलग सेग्रीगेट किया 27 क्यूब्स. तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि कितने क्यूब्स हैं जिनके 0 फेस कलर्ड है, कितने क्यूब्स हैं जिसके 1 फेस कलर्ड है, कितने क्यूब्स हैं जिसके 2 फेस कलर्ड है, और कितने क्यूब्स ऐसे हैं जिनके 3 फेस कलर्ड. ये 4 क्वेश्चन है, कोई 4 एक साथ रहेगा या एक ही क्वेश्चन रहेगा कि इतने क्यूब्स हैं जिनके 2 फेस कलर्ड. इसको समझने के लिए पहले फंडा को समझना पड़ेगा ना. 27 क्यूब्स में अगर काटा जाता है तो ऑब्वियसली अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये क्यूब जो है इसमें मैंने 3 बाई 3 बाई 3 डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये श्योर है कि हर साइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वाई, बिकॉज अगर मान लो मैं 3 बाई 3 बाई 3 को 1 बाई 1 बाई 1 में काटता हूं तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनते हैं, 27 क्यूब्स ही बनते हैं ना. विच मीन्स क्या मैं कह सकता हूं कि हर साइड क्यूब को 1 सेंटीमीटर और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हर साइड. तो मैं वही करता हूं. सो follow what I am doing it. I am doing this, I am dividing the cube into 27 parts. Now some parts will not be visible obviously because we are doing in 2D, right? But it's for understanding purposes. Okay, so one is there, one is there, right? Here it is here, right? अब आप ध्यान से देखो कितने क्यूब्स हैं जिनके 3 फेस कलर्ड है. ओके, कैसे करें. अब देखो आप यहां पे जो कॉर्नर क्यूब्स हैं, जो कॉर्नर क्यूब्स हैं इसके 3 फेस कलर्ड होंगे. जो कॉर्नर क्यूब्स है उसके 3 फेस कलर्ड है. तो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, देयर आर 8 कॉर्नर्स. ओके, सो देयर आर 8 कॉर्नर्स व्हिच मींस देयर आर 8 क्यूब्स. सो 8 क्यूब्स के ऐसे क्यूब्स हैं जिनके 3 फेस कलर्ड. क्लियर, 8 क्यूब्स हैं जिनके 3 फेस कलर्ड. डन, देयर आर 27 क्यूब्स. अब हमें डिवाइड करना है 8 क्यूब्स. अब हमें देखना है 1 फेस कलर्ड. पहले हम देखते हैं 1 फेस कलर्ड कितने हैं. अब देखो ये जो टॉप फेस है, टॉप फेस में एक क्यूब है जिसके सिर्फ 1 फेस कलर्ड है, ये वाला जो क्यूब है. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक फेस में सिर्फ एक क्यूब है जिसका 1 फेस कलर्ड है. क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं. हर फेस में एक क्यूब का 1 फेस कलर्ड है. 6 फेसेस, so there are 6 cubes which are having 1 face colored.
क्लियर और नॉट, राइट। कितने क्यूब्स हैं जिनके टू फेस कलर्ड है? अब देखो ये जो लाइंस पे जो क्यूब्स हैं, जो लाइन पे क्यूब है, मैं जिसमें ये वाला कर रहा हूं, दिस क्यूब, जो लाइन पे क्यूब्स हैं ये टू फेस कलर्ड वाले हैं। जैसे आप देखो ये लाइन वाला क्यूब है, राइट, ये लाइन वाला क्यूब है, ये एक और ये दो फेस कलर्ड होगा, राइट, क्योंकि अंदर वाला फेस तो कलर्ड नहीं होगा, कलर हम करते हैं बाहर से ही कलर करते हैं, राइट। सो वी कैन से जो लाइन वाले क्यूब्स हैं वो दो फेस कलर्ड है। क्यूब में कितने लाइंस होते हैं? क्रूडली मैं अगर कहूं क्यूब में कितने एजेस होते हैं तो 12 एजेस होते हैं। हर एजेस का एक क्यूब है, यानी कि देयर आर 12 क्यूब्स, देयर आर 12 क्यूब्स। सो 12 क्यूब्स आर हैविंग टू फेस कलर्ड, राइट। तो बच्चे कितने? 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 8 26, 27 26 माइनस कर दो, एक क्यूब ऐसे होंगे जिनके जीरो फेस कलर्ड होंगे। क्लियर और नॉट? ये क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके जीरो फेस कलर्ड होंगे, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू दिस। ओके, तो इसको करने का एक और तरीका भी है, हम इसको 3D ना बना के, क्योंकि ये क्लमजी टाइप का लग रहा है, इसको हम थोड़ा 2D टाइप बनाते हैं, और जो हम हर चीज को आप 2D में विजुअलाइज कर सकते हैं। हर टॉप से अगर देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाले कोने वाले क्यूब्स हैं, ये कितने कोने हैं? ये 8 तो हमेशा रहेगा। ये वाला क्यूब जो बीच वाला क्यूब है ये वन फेस कलर्ड है, राइट, क्योंकि इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये बीच वाला क्यूब 1। कितने फेसेस है? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लाइन में भी एक ही क्यूब है, राइट, लाइन में भी एक क्यूब है, तो हम कह सकते हैं कितने लाइन से? 12 लाइन से 12 क्यूब्स हो गए। एंड माइनस कर दो जो एकदम बीच वाला क्यूब होगा जिसके कोई फेसेस कलर्ड नहीं होंगे, राइट। दिस इज हाउ वी डू दिस। ओके, अब मैं इसी तरह के एक क्वेश्चन लेता हूं, एंड देन आई विल टेल यू द फॉर्मूला एज, कि इतना करने का बजाय वी कैन डू इट बाय अ सिंपल फॉर्मूला एज। A cube is painted blue on all 5 faces and then cut into 125 cubes of equal size. How many cubes are not painted on any face, one face, two face and three face? मैंने कोई ऑप्शंस यहाँ पे दिए नहीं है क्योंकि अभी हमको फंडा समझना है। Okay, so how many cubes are having all these conditions? Okay, so can we do this? तो लेट अस ड्रॉ दिस क्यूब। अब हम वो वैसे डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिंपल डायग्राम बना देंगे। अब 125 है, मतलब क्या होगा? हर फेस को हमने 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 125 का क्यूब रूट होता है 5। तो यानी कि हर फेस को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 1 2 एंड हियर 1 2 3 एंड 4। हैव वी डन दिस? ओके, राइट। अब ये कोने वाले क्यूब्स होंगे, ये तो हमेशा 3 फेस पेंटेड होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 फेस वाले तो 8 हो गए, राइट। अब देखो ये वाले जो क्यूब्स है, ये वाले जो क्यूब्स है बीच में, एकदम जो बीच में क्यूब्स है, दीज आर ऑल वन फेस पेंटेड क्यूब्स, दीज आर ऑल वन फेस पेंटेड क्यूब्स, राइट। तो कितने हो गए एक फेस में? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्यूब्स हैं। तो वन फेस वाले कितने हो गए? 9 into 6 is how much? 54। 9 into 6 is 54। ओके, सो 54 का क्यूब्स नॉट पेंटेड नहीं होगा, पेंटेड होगा, सॉरी, स्मॉल मिस्टेक है, इट्स पेंटेड हियर। ओके, सो वन फेस वाले कितने हो गए? 54 क्यूब्स, राइट। टू फेसेस वाले कितने हो गए? ऑन द लाइंस आप देख रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 cubes are there on the lines which are having two faces painted, right? Two faces painted. So 3 cubes multiplied by 12 lines, it will be 36 cubes. 36 cubes are having two faces painted, right? So 54 plus 36 is 90, 90 plus 98 is 98. So 98 cubes are done. So 125 में से 98 minus कर दो, it is 27 cubes are not painted on any other faces. Okay, right, यहाँ पे not होगा how many cubes are not painted, right, and this is how many cubes are painted one face, then two face and then three face, right? So this is how we do questions on cubes. अब इसको समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। Okay, this is the formula which you should know, right? अगर आप चाहो तो याद भी कर सकते हो,
कि अगर मान लो मैंने एक क्यूब को 125 क्यूब्स में डिवाइड किया या 216 में डिवाइड किया, राइट, तो 216 का क्यूब, हर जो भी नंबर है उसका क्यूब आप क्यूब रूट निकाल लो, तो क्यूब रूट इसका निकालेंगे तो इसका क्या होता है, इट इज 5, या इसका क्यूब रूट निकालते हैं इट इज 6. लेट दिस वैल्यू बी n, जो हम क्यूब रूट निकालते हैं, लेट दैट वैल्यू बी n. If that value be n, the number of cubes having zero side painted is n minus 2 whole cube. You can apply this on last question. 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5. 5 minus 2 whole cube कितना होता है, it is 3 cube. It is 3 cube is 27. Right? 6 into n minus 2 whole square. 6 into 5 minus 2 is 3. 6 into 3 square is 54. And 12 into n minus 2, two sides painted. So 12 into n minus 2 is 12 into 5 minus 2 is 3, which is 36. And 8 is the number of cubes which is always painted. Clear or not? Okay. Right. So this is how we do questions on cubes. Right. Okay. Can we move ahead now? So same thing. Three opposite different faces of a cube are painted with three different colors, black, yellow and white. This cube is then cut into 216 smaller but identical cubes. Answer the below questions. Number of small cubes that have exactly three faces painted, have exactly two faces painted, have exactly one face painted, no face painted. तो very simple. अब हम आराम से कर सकते हैं, 216 का क्यूब रूट निकाल लो, it is 6, right? So no face painted is 6 minus 2 is, cube is how much, 4 cube, which is 64, right? Have only one face painted, so 6 into 6 minus 2 whole square, so it is how much, 6 minus 2 whole square is 4 square. Now 4 square is 16, 16 6 are 96. How many cubes have exactly two faces painted? So two faces painted kitna hoga? Two faces painted is 12 times n minus 2. So 6 minus 2 is 4 is 48. So 12 times 4 is 48. And 3 faces painted is 6 minus 2 is 4 cube. That is 8, sorry. So 12 times that is 8. So this is the answer. So 3 faces painted having 8. Okay, अब इसी में कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि how many cubes have two faces painted and those two faces are black and yellow. अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा, have two faces painted and those two faces are black and yellow. So here आप देख रहे हो 48 cubes हैं, इसको आप exactly 3 parts में divide कर दो, then you will find that 16 cubes are having black and yellow, 16 cubes are having yellow and white, and 16 cubes are having black and white color. Something like this. Okay. How many cubes have one face painted and then face is say black? So divided by 3 again. So it will be 32, 32 each on black, yellow and white. This is how I will do the questions. Okay. Right. Okay. So this is how you do the questions. Can we move ahead now? Okay. Okay, let me see. So the comments, yes. I hope you are following the classes. Yes, thank you so much. Okay, let's move on to the next one. Now, instead of a cube, if it is given as a cuboid, if it is a cube and it is given as a cuboid, then how will you do the question? Very simple. Instead of Ln, if it is a cube of say 8 centimeter into 6 centimeter into 4 centimeter, and this is a cuboid, and this is cut into 1 centimeter cubes, right? So this is the formula. तो हम क्या करेंगे, what is ABC? अगर मान लो मैं इसको कहता हूँ 1 into 1 into 1 cubes में काटते हैं, so A will be equal to 8 by 1 on the longer side, so it will be 8. B will be equal to 6 by 1, which is 6, and C will be equal to 4 by 1, which is 4.
and then you can apply this formula. You see there is a correlation here. अगर देखो जीरो साइड पेंटेड अगर क्यूब्स होता तो क्या होता? The formula would have been n minus 2 whole cube. Can be written as n minus 2 or into n minus 2 into n minus 2. Instead of that हम कह देते हैं n के बदले हम डाल देते हैं a then b then c. Clear or not? So it will be a then b then c. So it will becomes a minus 2 b minus 2 and c minus 2. राइट सिमिलरली हम कह सकते हैं यार वन साइड पेंटेड होता है इट इज 6 टाइम्स n माइनस 2 होल स्क्वायर. अगर आप इसको 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 2 टाइम्स n माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n माइनस 2 होल स्क्वायर होता है. अब n माइनस 2 होल स्क्वायर को मैं a माइनस 2 b माइनस 2 कर देता हूँ, फिर b माइनस 2 c माइनस 2 कर देता हूँ, फिर c माइनस 2 and a माइनस 2 कर देता हूँ, एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी क्वेश्चन. So you can pause this video and if you want you can take this formula down for cuboids. Cuboids जब रहेगा और उसको जब हम काटेंगे तो what will be the result of the cubes, right? Clear? Okay. Right. Okay. Now comes the next thing which is the dice. How dice is different from cubes. What is the funda? What is the funda of dice? How do you do questions on dice? So basically if you see the dice जो होता है वो दो तरह के होते हैं. वो होता है एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है ऑर्डिनरी डाइस. स्टैंडर्ड डाइस मीन्स व्हाट? किसी भी डाइस में 6 फेसेस होती है, ये भी क्यूब का ही एक हिस्सा है. स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है. सो 6 के ऑपोजिट 1 होता है, 5 के ऑपोजिट 2 होता है एंड 4 के ऑपोजिट 3. ऑपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7. क्लियर? ऑर्डिनरी डाइस में ऐसा केसेस नहीं. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन टेस्टिंग? तुम्हें डाइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें डाइस का सिर्फ 3 फेस दिखाई देगा और उसके डिफरेंट व्यूज रहेंगे. बेस्ड ऑन दोज व्यूज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस फेस के ऑपोजिट में क्या है, उस फेस के ऑपोजिट में क्या है, इस फेस के ऑपोजिट में क्या है. दैट इज द फंडा फॉर डाइस. सो हाउ विल वी डू क्वेश्चंस? विल डू 1 or 2 questions and then I'll leave 1 or 2 questions for you to do. Okay, तो पहले बात समझते हैं कि डाइस होता क्या. Okay, so if you see over here, this is what a dice looks all about. How do you visualize the dice? Dice को कैसे हम समझेंगे? अब डाइस अगर मान लो मैं ये बनाता हूँ, right? If I draw a dice like this, and if I open up the dice, मान लो ये नीचे वाला फेस जो है वो A है, इसको हमने A लिखा है, और ये साइड वाला फेस मान लो B है. क्लियर? एंड दिस साइड इज C. अब मैं डाइस को खोलता हूं. आई ओपन ऑफ द डाइस. सपोज को डाइस अनफोल्डेबल है तो मैं डाइस को आई एम ओपनिंग ऑफ द डाइस. दिस इज हाउ द डाइस विल लुक लाइक. सो इफ यू सी द डाइस ओवर हियर, इफ A and this face is say D, okay, and the top face is say E and the side face is say F. So you अगर आप विजुलाइज करो तो दिखेगा आपको. If I draw this, then this is what A is all about, then this is B, then this is C, right? This face is D, right? And this face is E and this face is F, right? तो ध्यान से देखो आप. अब मैं इसी चीज को खोल के मैंने फ्लैट कर दिया है तो 6 फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं. मैंने डाइस को अबाउट A फेस ओपन किया है. दिस इज व्हाट अ डाइस विल लुक लाइक. A, this is B, this is C, this is D, this is E and this is F. Now we can say that B के opposite में we can say is E, C, A के opposite में F and E के opposite में D. Are you seeing this? Right? This is what a constructed dice looks like. Okay, and if I deconstruct the dice, this is what it looks like. अगर मैं fold कर दूंगा, this is what a dice will look like. But if I construct the dice and if I open it up along a particular face, then this is what a dice will look like. Your job is
कि आप इस डाइस को डीकंस्ट्रक्ट करके लिखो, इस तरह से बनाओ और अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत इसमें नहीं हो। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। राइट, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। राइट, अगर मैं इस फोल्डेबल डाइस को वापस बना दूं, दिस इज व्हाट अ डाइस विल क्लोज नाउ, बट इफ आई ओपन इट अप इट विल बी लुक सेम एज द पेज व्हिच आई हैव जस्ट शोड यू इन द प्रीवियस वन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इन द डाइस पार्ट, लेट्स सी सम क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट व्हाट इज द फंडा ओवर हियर। तो डाइस को हम जब हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और ओपन डाई हम करते हैं, तो ओपन डाइस कुछ ऐसा बना है जिसमें एक मैंने तो ऐसा बनाया आपको दिखाया, इसमें हम देख रहे हैं 1 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। अगर मैं डाइस को दूसरे तरह से डीकंस्ट्रक्ट करूं अकॉर्डिंग टू अदर फेस और फिर मैं एजेस को जोड़ूं और कुछ ऐसा डाइस बने समथिंग लाइक दिस, तो हम कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट में 6 होगा, 3 के अपोजिट में 5 होगा, 2 के अपोजिट में 4 होगा। राइट, अगर मैं कुछ इस तरह से ओपन करूं डाइस को और कुछ इस तरह से विजुअलाइजेशन आती है, देन इट विल बी 1 के अपोजिट में 3 होगा, राइट, 2 के अपोजिट में 5 एंड 4 के अपोजिट में 6। दिस इज हाउ द डाइस एंड डीकंस्ट्रक्टेड डाइस विल लुक लाइक। तो प्लीज ये ध्यान रखो, कोई भी एक आप ओपन करोगे अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएगा, इट विल नॉट बी दैट मच डिफिकल्ट। ओके, कैन वी मूव एट नाउ? कुछ सवाल करें हम लोग, yes or no? No, you cannot leave a cube by mistake. Yes, you cannot leave it. Okay, क्या मैं आगे बढ़ूं? Can I move it now? Good, easy. Okay, okay, let's move on to the next, this one. The number, observe the open die, the number of a possible combination is what? Which combination is existing? कौन सा combination possible है? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए कि which combination is possible from the combinations given. How will you do this one, this question? Very easy question, please do this one. If you view the videos, I don't think there's any problem. Right, just have to view the video and the funda will automatically cleared. Okay, even if I leave the questions, okay, but I'll pause the video for some time so that you can attempt the question later on. Okay, so don't worry. Okay, कुछ कह रहे हैं C, कुछ कह रहे हैं B, very good. कुछ कह रहे हैं D. Okay, let's see. अनुप्रिया कह रही है D, champions on the field कह रहा है B, श्रेयांश कह रहा है C. Okay, पुनीत कह रहा है C, very good. Okay, तो हम लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में 1 के अपोजिट में 6 है, 2 के अपोजिट में 4 है, 3 के अपोजिट में 5 है। तो 3 के अगर अपोजिट में 5 है तो 3 और 5 अगल बगल तो नहीं होंगे, तो ये तो नहीं होगा। 2 के अपोजिट में 4 है तो 2 और 4 अगल बगल हो नहीं सकते, तो ये भी नहीं होगा। ओके, 1 के अपोजिट में 6 है, 1 के अपोजिट में 6 है, 2 के अपोजिट में 4 है और 3 के अपोजिट में 5 है, यानी कि 1, 3, 4 आसपास हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं। और फोर्थ फिगर में देखो 6 के अपोजिट 1 है, तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। क्लियर और नॉट? आंसर विल बी सी ऑप्शन। राइट, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है, तो जस्ट विजुअलाइजेशन इज नेसेसरी। इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। राइट, लेट्स मूव ऑन टू अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछी जाती है इन डाइस, एक तो ये है कि आप ऑब्जर्व ओपन डाई को ऑब्जर्व करो और फिर उसके बेसिस पे कहो कि कौन सा चीज पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। ओके, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस, अब देखते हैं इसमें which letter will be opposite of letter D? See the question now. Which letter will be opposite of letter D? How will we do this question?
How will you do this question? Okay. Okay, 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 okay. वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे सी ई के बगल में ए है और सी ई के बगल में डी है, तो मतलब कह सकते हैं डी के ऑपोजिट में ए होगा। क्वेश्चन तो हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इस ओपन डाइस बनाता हूँ, लेट मी ड्रॉ इट। वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने डाइस को अबाउट सी ई एंड सी ई, so I can do like this. I'm opening this one up, C E A, okay, and C E D, okay. So A के opposite में D तो होना ही होना है, that's not a problem. Now C D B, let's see, C D B and C A B. तो C और B के बगल में A and C और B के बगल में D. You can do this question very easily. The answer is A option. Okay. What will be the open die that I leave it to you for your imagination. You can draw this and then you can say which letter will come opposite to C, which letter will come opposite to B, and something like this. Okay, let's see if you can do that. Yes, the answer will be A, correct. Okay, let's move on to the next one, please. Which symbol appear in place of question mark? Question mark के जगह पे, I mean opposite of question mark. Okay, there is some problem here in the question, or no, it's perfect, it's okay. Which symbol appear opposite of question mark, not in place of question mark, it is opposite of question mark. Tell me. ध्यान से देखो आप क्वेश्चन को, it becomes very easy. अगर मैं क्यूब को डिवीजन के बराबर खोलता हूं, अगर मैं क्यूब को अबाउट डिवीजन साइन खोलता हूं, तो डिवीजन साइन के चारों आसपास, चारों ऑपोजिट में क्या आती है वो हम देख लेते हैं. So if I open this one up about the division sign, so this is the division sign, this is the triangle, this is the equal to sign, this is the multiplication, and this is the this sign, circle sign. Okay, now circle and question mark and triangle and this one, what shape will come? It will come division. Question mark, this one, and what shape will come? Think a little bit. What shape will come? Eagerly awaiting your answers. Yes, in place of question mark. What shape? One place its question is correct. In place of question mark, what will come? ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है. If you see, visualize closely, division के आसपास क्या है? Equal to and triangle, and division के इस तरफ हो रहा है question, multiplication and circle. So they are opposite to each other. Now rectangle and circle are besides each other. So the option that is here is multiplication sign, because multiplication sign is near the this one, this sign. So answer will be opposite A option, right? The answer will be A option. Okay, yes, A option. Okay, कुछ कह रहे क्वेश्चन रॉन्ग? नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं लग रहा है. It is the question into sign only. Yes. Okay, I leave it to your imagination. I think that the answer is question into sign, because if you see, if you closely relate the first two diagrams, it's very clear that a third diagram in place of question mark, it will be a multiplication sign.
Okay, let's move on to a next question, please. A cube has 6 faces marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 on all its faces. 3 views of the cube are given. One view is 1, 4, 6, 1, 2, 3 and 3, 5, 6, right? Near 5, which all faces are, if they are marked by A and B, what will come in place of A and B? Think a little bit now. Okay, so you just draw the diagram and you can draw like this. If I open up about 1, 4 and 6, so I will say 1, 4 and 6 and 1, 2 and 3. So 3, 5, 6 are near to each other. So either 3 will come and 5 will come, 3, 5, 6 and 1, 2, 3. So I think this will be 2 here. Okay, let me draw it once again, don't worry. Okay, so I'm opening the cube about 1, face 1, so it will be 4 and 6 and it will be 2 and 3, right? Now 3, 5 and 6 are near, so 3, 5 and 6 are near. Okay, so what faces are so 5 is opposite 1, so 2 and 3 are near, right? 5, 6, 3 are near, so this is the diagram. अगर ऐसा है, then what face will come near 5? Which are the faces near 5? Think a little bit. Perfect. 2 and 3. Right. So answer is option number A. Very good, Shreyas Gopal. So if you open up the dice about face 1, that is a trick in this question. You have to think about which face I will open up. Now you are seeing that एक के बगल में 4, 6 और 2, 3 है, तो एक के अबाउट में खोल देता हूँ, तो 5 के बगल में क्या होगा, 2 and 3 होगा. So the answer for this question is A option, which is 2 and 3. Okay. Okay. Do one more question. Three different positions of a dice are shown below. How many dots lie opposite 2 dots? Think a little bit, please. What is the answer? Three different positions of a dice are shown below. How many dots lie opposite 2 dots? So I can say, I can open this dice about the face 6, because यहाँ पे भी आप 6 देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप 6 देख रहे हैं, right? So 6 and 6. Okay, तो पहले मैं 6 के आसपास देखता हूँ. 6 के आसपास क्या है? 6 के आसपास है 2 and 4, right? And 1 and 5. ये बात तो है. ओके, और 6 के आसपास, 6 के बगल में है 4 and 3, तो 6 के बगल में 4 and 3 है. सो आई विल से दैट, सो सॉरी 5 के बगल में 4 and 3 है. सो
So I will draw it once again. So it will be 6 and 2 and 4, 6, 1 and 5. Okay. Now let's see the face 5. 5 के बगल में 3 है and 4 है. So we can say 3. So 2 के opposite में 5 होगा. So it will be C option. Very simple. So you just have to visualize the diagram properly. Let me see the options. Yes, 5 is the answer. Very good. बहुत अच्छे. Okay, can we move it now? Yes. Adya, yes. Very good. So now you can do the other questions yourself in terms of dice. The only trick is you have to know about which face you will open up so that your job becomes easy. Okay, about which face you will open up the dice so that your job becomes easy, and then you can visualize कि किसके opposite में क्या होगा. Right? पहले दो डायग्राम से आपने फेस को खोल लिया, फिर आपको सोचना है कि 2 के ऑपोजिट में क्या होगा. राइट? कई बार हम कह रहे थे कि यार 1 के ऑपोजिट 5, तो 5 यहाँ पे भी लिख देते, वहां यहाँ पे लिख, यहाँ लिख देते. राइट? देन यू हैव टू चेक विद द थर्ड डायग्राम कि हो क्या रहा है वहां. देन यू आर सीइंग कि नहीं 2 के ऑपोजिट में 5. ओके, सो यू हैव टू क्रॉस चेक विद द थर्ड डायग्राम. पहले दो डायग्राम से आपने बना दिया कि उसके एक फेस मैंने 6 के ऑपोजिट, 6 के अबाउट मैंने खोला है, तो क्या क्या आ रहे हैं, एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज. Okay, let's move on to the next topic. After this I'll leave you with these questions to do. I'm pausing the video for 5 minutes or 1 minute. You can see the question yourself and then आप attempt कर सकते हो for practice. Okay, so these are some of the questions on dices. Okay, okay, let's move on to the next part, which is clocks and calendars. Okay, so first I'll discuss about the clocks part. Now what is the meaning of the clocks part? Right? पहले हम लोग ऐसा करते हैं, पहले हम कैलेंडर डिस्कस करते हैं, then we can discuss the clocks part because कैलेंडर्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं. राइट? तो लेट्स डिस्कस द कैलेंडर्स पार्ट फर्स्ट एंड देन आई विल डिस्कस द क्लॉक्स पार्ट. ओके, नाउ कैलेंडर्स में इट्स वेरी easy to do the questions on calendars. Only thing you need to do is you should know what is a leap year, what is an ordinary year, and how does leap year and ordinary change the days. Okay, so the first thing that is very much important to know in calendars is that our calendar is a Gregorian calendar. Our calendar is a Gregorian calendar. Clear? Now what is this Gregorian calendar? इसके हिसाब से हमारा जो कैलेंडर शुरू हुआ था वो हुआ था 01/01/00/01 एंड इस दिन था मंडे. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट. नाउ द कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी. व्हाट इज अ लीप ईयर? A leap year has 366 days. A leap year has 366 days. तो अगर मैं इसे 7 से डिवाइड दूं, बिकॉज 7 से एक वीक में 7 डे होता है, इट कम्स 52 वीक्स एंड 2 रिमाइंडर, सो 2 odd days. And what is a leap year? It is divisible by 4. 4 से डिविजिबल है. राइट? एंड सेंचुरी ईयर्स अगर है तो वो 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा. 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कॉल दिस एज अ लीप ईयर. ओके, इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 400 देन इट इज अ लीप ईयर, व्हिच मींस अगर मैं कहूं कि 1900, 1800 and 1700 although they are divisible by 4, they are not leap year because they are not divisible by 400. Right? Ordinary year has and a leap year, उसके अलावा जो भी होता है जैसे 1904 हो गया या 1896 हो, that is a leap year. But for century years it has to be divisible by 400.
Yes. And an ordinary year. So if I say ordinary year, it has 365 days. So if you divide it by 7, it becomes how much? 1 is the remainder. So an ordinary year has 1 odd day. An ordinary year has 1 odd day. A leap year has 2 odd days. Odd days means when the number is divisible by 7, it is an odd. What is the remainder? That becomes the odd day. Clear or not? So this is how you calculate for years. Okay. If you calculate for months, so you can say that Jan has 31 days, right? तो 31 days में अगर मैं 28 days minus कर दूं, because a week is just like a cycle of 7 days, तो 4 cycle मैंने minus कर दिया, उसके बाद कितने दिन बचते हैं? तो Jan has got 3 odd days. Jan has got 3 odd days. February has got either 0 or 1 because it depends on whether it's a leap year or ordinary year, right? March has got 3 odd days, right? April has got 2 odd days. May has got 3 odd days. June has got 2 odd days, right? July 3, August 3, September 2, October 3, November 2 and December 3. This is the funda for odd days in a month. And odd days in a year, leap year has 2 odd days, ordinary year has 1 odd day. इतना हमें अगर पता रहेगा तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. अब देखो मैं आपसे एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ. प्लीज फॉलो दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. द थिंग इज, हमारी जो शुरुआत हुई थी, हमने कहा था 01010001, दैट वाज अ मंडे. ये अज्यूम्ड, अगर ये अज्यूम नहीं करेंगे तो सारे दिन गलत हो जाएंगे. सो दैट इज अ assumption which we have to follow, एक ground rule. Now based on that, if I say, अगर मान लो मैं 100 years का एक ब्लॉक लेता हूँ, I take a block of 100 years, 0101 0001 to 0101 0100, 100 years का ब्लॉक. तो अगर मैं 100 years का ब्लॉक लूँ तो उसमें लीप ईयर्स कितने होते हैं? लीप ईयर्स 25 नहीं होंगे, 24 होंगे, बिकॉज 100 इज नॉट अ लीप ईयर. सो 24 years लीप ईयर्स एंड 76 ऑर्डिनरी ईयर्स. सो कितने डेज होंगे और कितने ऑड डेज होंगे, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 24 into 2 plus 76 into 1 which is 124 days. तो 124 को 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो होता क्या है? 5 ऑड डेज, राइट. सो अगर मैं ब्लॉक ऑफ 100 ईयर्स लूं तो इट हैज 5 ऑड डेज. ऑड डेज को मैं ओ लिखता हूं. अगर मैं 200 का ब्लॉक लूं, 200 साल का ब्लॉक लूं, तो 5 का क्या होगा? 10 हो जाएगा. लॉजिक तो वही रहेगी. 10 मतलब कितना हो गया? इट बिकम्स 3, बिकॉज एक वीक हमें माइनस करना है. इट हैज 3 ऑड डेज. अगर मैं 300 ईयर्स का ब्लॉक लूं, 1 से 300 का, तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, राइट. 300 अभी तक आया, अभी वही लॉजिक होगा. 15 मतलब 15 में से 2 वीक माइनस कर दो, इट बिकम्स 1 ऑड डे. और अगर मैं 400 साल का ब्लॉक लूं तो कितना होता है? इट इज 20 नहीं होगा, 21 होगा, क्योंकि 400th year is a leap year, so one day has to be added extra, so it will be 21 days, यानी कि 0 हो जाएगा. ओके. अब ग्रेगरी ने कुछ कोड दिए, उसने कहा है कि 0 अगर रिमाइंडर आएगा तो वो दिन होगा संडे, 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, so on and so forth, 5 आएगा तो फ्राइडे एंड 6 आएगा तो सैटरडे, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, प्लीज फॉलो दिस. ओके. सो आर यू सीइंग ओवर हियर दैट 1 to 100 में 5 रिमाइंडर बच रहा है. 5 का कोड क्या है? फ्राइडे. 3 का कोड क्या है? 3 का कोड है वेडनेसडे. 1 का कोड क्या है? 1 का कोड है मंडे. और 0 का कोड क्या है? 0 का कोड है संडे. तो मैं ये कह सकता हूं कि द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी हैज टू बी अ फ्राइडे और अ वेडनेसडे और अ मंडे और अ संडे. दैट मीन्स द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, कैन नॉट बी थर्सडे, कैन नॉट बी सैटरडे, राइट. द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, कैन नॉट बी थर्सडे, कैन नॉट बी सैटरडे. यस. मैं एक बार फिर से बता दूं,
कोड दिए हैं ग्रेगरी ने, अगर 7 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तो दिन होगा संडे, 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने 1 से 100 में कितने ऑड डेज निकाले हैं? मैंने 5 ऑड डेज निकाले। 5 का कोड क्या है? फ्राइडे। 1 से 200 साल तक हो गए तो 3 ऑड डेज हो गए तो वेडनेसडे। ये लास्ट डेज ऑफ द सेंचुरी होते हैं। तो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी जो होगा वो होगा फ्राइडे, 3 का कोड क्या है? वेडनेसडे, 1 का कोड क्या है? मंडे, और 0 है संडे। तो लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी हैज टू बी दीज 4 डेज। क्लियर? राइट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट वी शुड नो। ओके, और ऐसे ही आप एक चीज और देखो, दिन का अगर मैं कोड देखूं, इफ आई से नहीं ऐसा कुछ नहीं, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 400 इज अ लीप ईयर, तो एक एक्स्ट्रा डे मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, तो 20 ना होके 21 हो जाएगा। 21 मीन्स बेसिकली 0। 7 इज अ मल्टीपल, सो अगर मैं 7 कर रहा हूं मतलब क्या? आई एम सर्कलिंग इट and coming to the same point. So I'm circling it 3 times. So I'm coming to the same point. So that's why it's a 0. Okay. अब एक चीज और देखो आप, वीक्स मंथ्स में देखते हैं। मंथ्स में देखो आप, मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं? 3 होते हैं। मार्च में 3 होते हैं, अप्रैल में 2 होते हैं, मई में 3 होते हैं, जून में 2 होते हैं। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। इन तीनों को ऐड करो आप, 2 + 3 + 2 क्या होता है? 7। 7 मतलब क्या हो गया? 0। When I say of 7, which means it's a 0, which means अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, right? So you should know that the calendar of April and the calendar of July is same. So I'm writing it here. अप्रैल एंड जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। सेम होगा मतलब 1 अप्रैल जो डे होगा 1 जुलाई भी वही दिन होगा। 1 अप्रैल जो डे होगा, अगर 1 अप्रैल मंडे है तो 1 जुलाई भी मंडे होगा। अगर 30 अप्रैल मान लो थर्सडे है तो 30 जुलाई भी थर्सडे होगा। क्लियर और नॉट? सो अप्रैल एंड जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। प्लीज फॉलो इट। सितंबर और दिसंबर, सितंबर में 2 दिन होते हैं, अक्टूबर में 3 दिन और नवंबर में 2, तो कितने हो गए? सो इट मींस 2 + 3 + 2 is 7. 7 is how much? 0. सो सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा, राइट? एंड देयर इज वन मोर मंथ, पेयर ऑफ मंथ्स, जहां पे कैलेंडर सेम होता है, जो बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं। अप्रैल जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, सितंबर दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा। देन यू विल नोटिस दैट इफ यू सी मार्च 3, April 2, so 3 + 2 5, May is 3 8, June is 2 10, July is 3 13, August is 3 16, September 2 18, October 3 21, 21 is again 0, which means मार्च एंड नवंबर का कैलेंडर भी सेम होगा। ये 3 अगर बातें आप ध्यान में रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी। क्लियर और नॉट? अप्रैल जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, राइट? सितंबर दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा, मार्च नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। ओके, सो these are some of the things which you should know. ओके, अब इस चीज को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा सवाल करने में? हाउ विल आई डू दिस क्वेश्चंस, यूज दिस इन क्वेश्चंस? सो दिस आई विल टेल यू। Find out a day when some other day is given. It was Friday on 7 December 2007. What was the day on 7 December 2006? Tell me. Now 2006 is an ordinary year, O year, and 2007 is also an ordinary year. तो जब मैं 7th December 2006 से 7 December 2007 में जा रहा हूं, so I am passing February, and February has only one day, that one day has to be added, which means whatever a day in Friday in 2007, it will be one day less, it will be Thursday in 2006, right? So it will be Thursday. The answer for this question is 7 December is the Thursday.
Yes, you are right. Jan March is also same. Not Jan March, it will be Jan April. Because if you see over here, and it's a very good point put up by a student, I'll tell you that. If you see over here that Jan is 3, Feb is 1, March is 3. 3 plus 1 4, 4 plus 3 is 7. So during leap years Jan और अप्रैल का कैलेंडर भी सेम होगा, यानी कि लीप ईयर में जैन, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा. एट ऑल ईयर्स अप्रैल जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, बट ड्यूरिंग लीप ईयर्स जैन, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा. क्लियर और नॉट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, राइट? अब इस चीज को मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा ऑफ फाइंडिंग आंसर टू अ क्वेश्चन. ओके, सपोज करो मैं आपसे कहता हूं, आई एम द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो पूछी जाती है दैट आई विल टेल यू. ओके, सपोज करो इफ आई टेल यू दैट if the first Monday of March falls on 3rd, then new year for next year will start on which day? Tell me. अगर मंडे फर्स्ट मंडे मार्च का 3rd को पड़ता है तो अगले साल जो शुरू होगी वो कौन से दिन से शुरू होगी? हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन इन not 1 but 15 seconds? It's very easy. Think a little bit. ओके, तो मैंने आपसे क्या कहा था, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है. मैंने आपसे कहा था कि मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा. तो अगर 3rd मार्च मंडे है तो 3rd नवंबर भी मंडे होगा. 3rd नवंबर अगर मंडे है तो 30th नवंबर यानी कि 1st दिसंबर भी मंडे होगा, right? Because 3rd March is a Monday, then 3rd November is a Monday, which means the 1st December, add 28 days to it, that will again be a Monday, which means 1st December will be a Monday. Again 28 days add karo, 29 December will be a Monday. 30th will be Tuesday, 31st will be Wednesday, 1st January next year will be a Thursday. Answer for this question is Thursday. This is how you do the questions on calendars in one shot. इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं. ओके, यस इट विल बी थर्सडे. मैं कह रहा हूं द क्वेश्चन वाज कि अगर मंडे का फर्स्ट मंडे मार्च का 3rd को गिरता है, 3rd को पड़ता है, देन अगले साल जो नई साल जो शुरुआत होगी 1st जनवरी, वो कौन सा दिन होगा? दैट वाज माय क्वेश्चन. तो मैंने बहुत चालाकी ये की कि मुझे पता है मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है, राइट? तो 3rd मार्च अगर मंडे तो 3rd नवंबर भी मंडे होगा. 28 डेज ऐड करो 3rd नवंबर में तो कहाँ पहुंचते हैं? 1st दिसंबर पहुंचते हैं. 1st दिसंबर भी मंडे होगा. अगेन 28 डेज ऐड करो, 29 दिसंबर भी मंडे होगा. 30th ट्यूसडे होगा, 31st वेडनेसडे होगा, 1st जैन थर्सडे होगा. आंसर विल बी थर्सडे. क्लियर और नॉट? इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं ऑन कैलेंडर्स. ओके, राइट. Okay, then we'll do questions on clocks a little bit. I'll make you understand the funda of clocks. Okay, clocks में फंडा ये होता है, very simple. If you see that a clock has a minute hand and an hour hand. Okay, what is the speed of the minute hand? What is the speed of the minute hand? Minute hand 360 degrees कवर करता है 60 minutes में, which means the speed of the minute hand is 6 degrees per minute. And what is the speed of the hour hand? It is
1 घंटे में 30 डिग्री क्रॉस करता है, विच मीन्स हाफ डिग्री पर मिनट, विच मीन्स एट ऑल पॉसिबल टाइम्स मिनट हैंड जो होता है वो आवर हैंड से हमेशा 5.5 डिग्रीज पर मिनट आगे रहता है। क्लियर और नॉट? मैं अगर आपसे पूछूं कि मिनट हैंड आवर हैंड से कितने मिनट बाद मिलेगा, हाउ विल यू डू दिस? वेरी सिंपल, कि अगर मिनट हैंड आवर हैंड से हर मिनट में 5.5 डिग्री आगे रहता है, 5.5 आगे रहता है, तो मिनट हैंड आवर हैंड से तब मिलेगा जब मिनट हैंड आवर हैंड से 360 डिग्री आगे हो जाएगा। वो कितने देर में आगे होगा? अगर 1 मिनट में 5.5 आगे होता है तो 360 कितने मिनट में आगे होगा? 360 बाई 5.5 विच इज 720 बाई 11 विच इज 65 एंड 5/11। क्लियर? तो मिनट हैंड आवर हैंड से एवरी 65 5/11 मिनट्स में मिलता है। एवरी 65 5/11 मिनट्स में दे विल मीट, दैट यू शुड नो। Clear? Again, the question asks, and that I will tell you through the questions. What is the angle between minute hand and hour hand when the time is 4:30? How will you do this question? What is the angle between minute hand and hour hand when the time is 4:30? How will you do this? 4:30, 4:30. So we can say that it will be something like this. This is the angle which I have to find out. Okay. Now everything has to be referenced with respect to 12. So what is the speed of the minute hand? 6 degrees. So हम कह सकते हैं यार 30 minutes में 6 degrees, तो कितना होगा? 30 into 6 is how much? 180 degrees चला। ओके, लेकिन 4 बजे है, तो 4 बजे 4 घंटे बीत गए हैं, 1 घंटे में 30 डिग्री क्रॉस होता है, तो 4 बजे 4 घंटे में कितने? 120 डिग्री होगा, तो ये एंगल तो और कम हो जाएगा, 120 विच इज 60 डिग्री। क्लियर और नॉट? नाउ ड्यूरिंग दिस 30 minutes our hand has also moved by half degree per minute. Our hand has also moved by half degree per minute. So that again that angle will be further reduced. So 30 minutes में our hand कितना चला है? It will be how much? 30 minutes में our hand कितना चला है? 30 into half is how much? 15 degree. So 15 degree will be subtracted from 60 degree, angle will be 45 degree, answer will be none of the above. Clear or not? Answer will be none of the above. Okay. So if I say, let me do this calculation, it's a very easy formula which you can remember, that if the time is x baj ke y minute, then the angle will be 5.5 y minus 30x, and that will be in the mod sign. The angle between minute hand and hour hand will be 5.5 y minus 30x, and hence this is the angle. If the angle comes out to be negative, you have to take the modulus sign. Clear or not? Okay. So this is how you calculate the angle between hour hand and minute hand. Okay. What will be the answer for this question? A boy saw the clock when it is 5 a.m. The clock loses 8 minutes in half a day. Right? The clock loses 8 minutes in half a day.
what will be the true time when he sees the clock at 10 p.m. on the 4th day? How will you do this question? Let me see the comments. Okay. A boy saw the clock when it is 5 a.m. The clock loses 8 minutes in half a day. What will be the true time when he sees the clock at 10 p.m. on the 4th day? So 5 a.m. on the first day to 5 a.m. on the 4th day is how much? 72 hours. And 72 hours plus 10 p.m. मैंने 5 a.m. से 5 p.m. और 12 घंटे 84 and 89 hours. So can we say that 24 hours जो होता है correct clock का, now since this loses 8 minutes and half a day, which means क्या हो गया 23 hour, it loses 16 minutes in a full day. So 24 hours जो correct clock का है वो 23 hours and 44 minutes of this clock. Can I say this? 23 hours and 44 minutes of this clock. Can I say this? Right? So 23 or 44 minutes. 44 minutes को अगर मैं hours में convert करूँ तो कितना होता है 44 by 60, which is 11 by 15. Okay. So it will be 24 hours of the correct clock. So it will be 23 and 11 by 15, which is 356 by 15. Okay. So can I say that 356 by 15 hours of this clock is equal to 24 hours of the correct clock? Can I say this? So now how much time has elapsed from 5 am to 10 pm? It is 89 hours. So 89 hours of this correct clock will be how much? How many hours of this? I mean of this clock is how many hours of this one? 24 by 356 by 15 into 89. So put this 15 up. What is the value? It will be 4. So it will be how much? 60 hours. Right? So can I say, let me do the calculation if it is correct or not. 24 into 89 into 15 by 356. So it will be 4 6 so 90 hours. Okay. So 89 hours of this correct clock is equal to 90 hours of the correct clock, which means the time will be 1 hour more than 10 pm, which will be 11 pm. Is that clear? So this is how you do questions of clocks like this. Yes, very good. How many times are the hands of a clock at 90 degrees in 12 hours? Tell me. The hands of a clock in a day meet how many times? Meet how many times? So I told you that they meet after 7:20 by 11 minutes. So 65 5 by 11 minutes. So in a day they are 1440 minutes. 1440 by 720 by 11 is how much? It is 22 times. So hands of a clock meet 22 times in a day. So we can say that at any angle it is always 22 times. Okay. So in 90 degrees it will also be 22 times in a day, and 270 degree is also 90 degree only. So 270 degree also will be 22 times. So in a day they will be at 90 degrees 44 times in 24 hours. So in 12 hours it will be 22 times. Notice the question very carefully.
any angle and the corresponding angle of 360 minus that angle will be 22 times. So 90 degrees 22 times in a day, 270 degrees will also be 22 times. So in a day there will be 44 times. तो अगर 44 टाइम्स एक दिन में होगा तो आधे दिन में कितना होगा 22 टाइम्स. सो आंसर विल बी 22 टाइम्स. Yes, very good. Okay, so now we'll focus on something on non-verbal reasoning a little bit. I'll pause the question. Okay, pause the video for some time so that you can see the questions yourself. These are some of the questions for you to practice. Which year after 2005 will have the same calendar as of 2005? In a day there is 24 hours. 1 hour is 60 minutes. That's why I multiply 24 hours by 60 minutes is 1440 minutes. And we know that every 720 by 11 minutes they meet. So I divide 720 by 11 by 1440 and then I get the answer to be 22. That's why I divided by 1440. Well, I mean, this is a very good question asked by Shreyash Sharma. Okay, that's why I divided by 1440. Okay, so this question you can try it yourself. Okay, this question you can try it yourself. Meanwhile, I move on to my next a small introduction to non-verbal reasoning and the kind of questions which is normally asked. Now, these are some of the questions in counting figures. How many triangles are there in the figure? Tell me. Now there is no such formula for doing this question. Only thing you need to know is how many triangles are there in the figure. So if you divide it, if you see this one, this has got how many triangles? 1, 2 and the bigger one 3. 3 4s are 12. 12 triangles are already there. Now you can see that this is also a triangle and this is also a triangle which have not been counted. And the 4 parts also have not been counted, so it will be 12 plus 4, 16 is the answer. Right? So this is the figures for counting figures. Now tell me how many triangles are there in the given figure. Think a little bit. How many triangles are there in the given figure? Now if you see over here, if I divide by one line, I get 2 regions. Okay, so 1, 2 and 3 triangles, right? So if I divide it by 2 lines, how many regions I will get? I will get 6 regions. So it will be 1, 2, 3. It will be how many triangles? 1, 2, 3, 4, 5 and the bigger one 6. Okay. So if I divide into 2, it will be 3 triangles. If I divide into 3, it will be 6 triangles. If I divide into 4, it will be 4 more triangles will be added. So it will be 10 triangles. Answer will be A option. Right, very carefully you have to do it. Okay, the answer is 10 triangles. Now this question I leave it to you so that you can try this question. Count the number of triangles and number of squares. I pause the video. This is for your homework which you can try. These are the kind of questions which are asked. Counting figures is also one of them, right? You can do it by options also, but I request you to do this question yourself. Okay, this is one kind of question which is counting figures. Then the question usually comes on embedded figures. Yes. Now what is this embedded figure means? It means कि एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर का ये हिस्सा, ये जो पार्ट है, ये इनमें से कौन से डायग्राम में छुपा हुआ है.
That is what is meant by embedded figures. Okay. Okay, I'm seeing the comments also. Very good. Yes. तो ये प्योर विजुअलाइजेशन है अनुप्रिया. Easy. Yes. One is the answer. So there's no such rule for that. आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा फिगर इसमें छुपा हुआ है. Right? Options will be close, but yes. सही है. Very easy. Okay. This one please. कौन सा फिगर है जिसमें ये पार्ट जो है वो छुपा हुआ है इसमें? Think a little bit please. Very good. बहुत अच्छे. श्रेयस फुल फॉर्म में है. लेट्स सी. ध्यान से देखो एक बार प्लीज. लुक्स टू बी कंफ्यूजिंग, इसलिए मैंने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है. If you notice it, the answer for this question is 4. ध्यान से देखो, it will be done. This is one kind of question. Then figure matrix. Now this question में इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, what happens in these kind of questions is कि अगर first row में group of 3 figures make some kind of a pattern where the third figure is obtained from the first 2 figures, और वही लॉजिक सेकेंड रो में भी होती है, उसी लॉजिक को अगर थर्ड रो में फॉलो किया जाए तो कौन सा फिगर आएगा? दैट इज द थिंग फॉर द फिगर मैट्रिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज. ओके. Very good. What is the answer? Yes. The answer is 4. So some part of this is missing in the third one. That is also followed in the question part as well. So the answer for this question is 4. So pure visualization. Okay, so answer for this question is 4. मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ. This is for your practice. This you can try. Okay, at home. Yes, the answer for the previous question was 4. Now this question, you can pause the video and you can attempt the question. Okay, I'm not wasting too much of a time. Now this question. Choose a figure which would most closely resemble the unfolded form of figure Z. Now when you fold it along the particular line, when you unfold it, what figure it will represent? So when you unfold it, which means the reflection is created on the other side. The reflection is created on the other side. Yes. Okay. Very good. Perfect. Perfect. The answer for this question is option number 2. Yes. Adya, yes. Very good. The answer is for this question is option number 2. Because when we unfold it, we create a reflection on this side partially and we create a reflection on this side as well. So this is reflected this side and this part is reflected on this side
Answer is option number 2. So we create a reflection when we have questions of paper folding type questions. Okay. So this question is for your practice, which you can, yes. This question is for your practice, which you can try it. I am not doing this question. Then sometimes the questions is on series. The last question for the day, and then we can close it. Which figure will continue the series? Okay. Think a little bit. The answer for this question is, I am eagerly waiting for the suggestions. The answer for this question is no. No. Think a little bit. I am still waiting. So it gets enlarged and it gets inverted. Enlarged and get inverted. If you see the question and the answer for this question, enlarged and inverted, and moves by, a new figure is also formed. So I think the answer for this question is option number 3. You can verify it. Okay. So this was an interesting session on non-verbal reasoning. I'm passing you for some more questions which you can try. I'm pausing the video for 30 seconds. You can try these questions at home and view this video once again and try these questions which I have left it for you to do. Okay. So this is one question which I'm pausing. Then possibly the last question. This you can try at home. Okay. Wonderful it is to interact with all of you. Thank you so much. And wonderful it was to present before you a session on or 2 sessions on BITSAT लॉजिकल रीजनिंग. बहुत मुझे लगता है कि ये काफ़ी है आप लोग को लॉजिकल रीजनिंग के सारे सेक्शंस क्लियर करने में. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. मे यू ऑल डू वेरी वेल इन योर BITSAT एग्जाम. फॉलो द स्ट्रैटेजीज जो हमने फॉर योर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स पार्ट and the English part which is taken by the English faculty and logical reasoning taken by me. Follow the basic rules, view these videos, please go through these videos once again. Kal wale as well as aaj wale video, I think most of the part will be clear. You can score full marks in the logical reasoning part. Thank you so much.